objections and surmises, इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट्स बार-बार दोहरा रहे हैं। जरा जल्दी खत्म कर लें ना, आपका वक्त निकल जाएगा दूसरों का। You are representing the Supreme Court Bar Association. You're not a petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, हम चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, हम बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अमेंड, अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलें, आप यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, डू यू वांट टू कैन इफ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction conferred by the constitution. जी. And it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. Yes. This is settled. You will have a super Supreme Court. जी. Any provision of the constitution where appeal is given by a simple legislative power by the parliament, that is permissible under the law? No, my lord, under the constitution it is not, sir. That's my, and may I just quickly take a lordship? How would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental yes, my lord. powers. Ji. Because you see, they have to be interpreted liberally, as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक आप करके फिर खत्म करूँगा। Directly उस पे आ जाए ना। जी। If the parliament is competent to enlarge the jurisdiction and also to confer any supplemental power. Yes, my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। नहीं, आप देखें ना, आप पहले इसको तो जरा रूल 50 अगर तो वो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read? जी, I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. SCMR. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had said. My lord, kindly see page 617, para 17. Page 6? 617, my lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the Imperial Laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of
there is no ambiguity interpreting entry 55 of part 1 of Federalist Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Such entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament to make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on it supplementary powers. If entry 50 was not there in the federal legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you are not reading the relevant part. The relevant part are 2 lines. जी. The last is 616. Pe last line pad lijiye. The 2 lines following that. That's what is the answer to the present question. 616 की last line पढ़िए page पे. जी, from the aforesaid. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution. आप पढ़ तो लेना provision तो वही है ना. By a law by the federal legislature. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही कि जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 के अभी जुबैर साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज अभी एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया इसमें 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए आप सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो क्रक्स है जो उसका इशू है अदब इसमें आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इसके सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम 2 लाइनें तो ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no doubt that the enlargement jurisdiction conferred supplementary powers can only be done through law made by federal. लेकिन ये है सर लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर एक मिनट सर एक मिनट आपने पढ़ा है दिस इज मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना यार देखिए ये हमारा काम नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया सर लेकिन जो असल उसका क्रंक वो अच्छा अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं कि खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूं आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं इसमें पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट इट इज द गिविंग ऑफ पावर हु कैन गिव दैट पावर अपील आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि हार्डली एनी इफेक्ट सर मुझे नहीं मालूम कि इट इज नॉट अ पावर अगेंस्ट अ रिव्यू आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं 22 केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना घबराहट की बात नहीं है मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस घबराहट से आर्गुमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन या तो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा अब वी हैव नो टू वेज आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है बार-बार ये बात रिट्रेट ना करें नहीं समझ गए घबराहट तो नहीं हो रही सर घबराहट तो नहीं हो पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता ये कॉम्पिटेंस है या नहीं सुन ली बात है ना बार-बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना खत्म अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे ठीक है थैंक यू सर जी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है फिलवक्त के लिए वक्फा लिया गया है कुछ ही देर बाद इसे दोबारा शुरू किया जाएगा।